Now let's move on to the next exercise जहाँ पे हमें कुछ columns को match करना है. कॉलम नंबर 1 में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और कॉलम नंबर 2 में भी उसके कुछ क्लॉजेज या फिर फ्रेजेस होंगे और हमने देखना है कि कौन सा क्लॉज या फ्रेज फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ सही जाता है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सम सेड अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस. सो द करेक्ट आंसर इज 9. ही वाज अ गुड एथलीट व्हेन ही केम बाय दिस वाइल्ड आइडिया. 8. ही वेंट इनटू देम हार्डर देन एनीवन एल्स. 7. ही हैड पावर to preach his ambition openly. 1. He had only to stick for few more days to that wild idea. 2. I used to do in those days when food used to be cheap. 3. His white hair and the red uniform showed each other off to perfection. 4. And the last statement is, it must have taken him more than 60 years to do it. So the correct answer is 6. So we are done with the exercise of match the columns as well. I hope you have understood this very well. Thank you.